नमस्कार, मैं प्रोफेसर आनंद चौधरी आपका फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रूल द रेगुलेशंस में। और आज का विषय होगा एडल्ट्रेटेड ड्रग्स। आयुर्वेदिक औषधियों में जो 3 श्रृंखलाएं बांटी गई हैं, जो 3 भाग किए गए हैं, जिनका उत्पादन किसी मैन्युफैक्चरर के द्वारा नहीं करना चाहिए और यदि वो ऐसा करता है तो दंड का भागी होगा। उसमें से एक सेक्शन 33E में डिफाइन किया गया है मिस ब्रांडेड ड्रग्स, दूसरा डिफाइन किया गया है सेक्शन 33EE में एडल्ट्रेटेड ड्रग्स, और तीसरा है सेक्शन 33EEA में स्प्यूरियस ड्रग्स। तो पिछले सीरीज में मित्रों हम लोगों ने बात की है अंडरस्टैंडिंग ऑफ मिस ब्रांडिंग ड्रग्स और उसकी जो लीगलिटी है उस पर हम लोगों ने विचार विमर्श किया। उसमें यही था कि रिवाइज के लिए जिसको पूरा देखना हो पिछला सीरीज़ देख ले, पिछला सेशन देख ले। इसमें तो एक बात उसमें आई थी कि अगर क्लेम बहुत ज़्यादा हो तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी संहिताओं में जो लेखन शैली थी वो थोड़ा सा बड़ा ही उपमा दे करके और बड़ा विशेषण दे करके रहा करती थी। उसमें ये एडजेक्टिव्स बहुत लगाए गए हैं। किसी भी औषधि का जब विवरण दिया जाता है तो कहा जाता है कि इसकी फलश्रुति में कि जैसे सिंह की दहाड़ से सियार भाग जाते हैं, उसी तरीके से इस औषधि का प्रयोग करके यह रोग भाग जाता है। ऐसे कई चीज़ें थी। तो अब हमारा लिटरेचर इस तरीके से लिखा गया है। उस समय लिटरेचर लिखने की उस समय लेखन शैली यही थी। मैं आयुर्वेद को लिटरेचर नहीं कहूँगा, मैं आयुर्वेद को साइंस कहूँगा, लेकिन जो लेखन शैली थी वो उपमात्मक थी, विशेषण दिए जाते थे किसी भी चीज़ को और प्रभावी तरीके से कहने के लिए। लेकिन आज साइंस इसको नहीं मानता। साइंटिफिक जो राइटिंग है वो कहती है कि no adjective, no upma, only the basics and the findings and the results and the analysis, all that. तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं एडल्ट्रेटेड ड्रग्स। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है और फिर इसके मूल में हम यही कहेंगे कि ये जो डिफिनीशंस हैं वो कॉपी पेस्ट हैं। चलिए हम एक एक करके पढ़ते हैं, आयुर्वेद से इसको कोरिलेट करते हैं और फिर देखते हैं कि ये कितनी प्रभावी और कितना रिलेवेंट है, हाउ मच इट इज रिलेवेंट टू द आयुर्वेदिक क्लासिक्स and the description of Ayurvedic medicines about the Ayurvedic classics. Okay, start, please. See, the section 33EE of the Drug and Cosmetic Act 1940, it is writing that for the purpose of this chapter means 4th A, an Ayurvedic Siddha or Unani drug shall be deemed to be adulterated. इनको adulterated drug कहा जाएगा जब क्या क्लॉज A कहता है इसका it is consist in whole or in part of any filthy, putrid or decomposed substance, और वो क्लास बी आएगा। तो क्लास ए कहता है कि अगर मेडिसिन को बनाने में, और यहाँ आयुर्वेदिक मेडिसिन को बनाने में उसका पूरा का पूरा मेडिसिन का पार्ट और होल और इन पार्ट या उसका एक खंड यदि किसी फिल्थी, तब साफ सुथरा नहीं, प्यूट्रिड सड़ा हुआ, और या डिकम्पोज मटेरियल एकदम से इन तीनों शब्दों के अंग्रेजी के अलग अलग मीनिंग है, फिल्थी, प्यूट्रिड, डिकम्पोज। इनको आप इंग्लिश लिटरेचर के मीनिंग देखिए। और मतलब कोई भी चीज़ जो कि औषधि बनाने के योग्य नहीं है, उनसे यदि औषधि बना करके कॉमर्शियल इंटरेस्ट में या किसी भी इंटरेस्ट में, ज़्यादातर कॉमर्शियल इंटरेस्ट ही होता है, तो वो औषधि अगर ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा जांच की गई और उसकी रिपोर्टिंग इस तरीके से आती है कि उस औषधि को बनाने में फिल्थी, प्यूट्रिड और डिकम्पोज्ड मटेरियल का प्रयोग हुआ है, तो वो औषधि एडल्ट्रेटेड ड्रग कहलाएगी और उसकी फाइन औषधि निर्माता को देनी होगी। चलिए दूसरे बात है क्लॉज बी पर। ये कहता है कि इफ इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, पैक्ड और स्टोर्ड under insanitary conditions whereby it may have been contaminated with filth or whereby it may have been rendered injurious to health. अब ये क्लॉज बी कहता है सेक्शन 33EE का एडल्ट्रेटेड ड्रग्स को डिफाइन करते हुए कि यदि वह आयुर्वेदिक औषधि ऐसी जगह पर बनाई गई है और इस तरीके से पैक की गई है या बनाने के बाद ऐसी जगह पर स्टोर कर दी गई है जो कि साफ सुथरा नहीं है, इनसैनिटरी कंडीशन है, और उसकी वजह से उस औषधि में जो कि बनाई गई गंदी जगह पे
जो कि पैक की गई एक गंदी जगह पे, और ये गंदी जगह का तात्पर्य आप जीएमपी और उसके क्वालिटी एश्योरेंस से समझिए। उसमें एक अच्छा ज़्यादा समय लगेगा, उस पर भी हम वार्ता करेंगे आपसे, अपनी बात पहुंचाएंगे सभी विद्यार्थियों के लिए या सभी स्टेक होल्डर्स के लिए। लेकिन यहाँ पर चूंकि आज हमको अगले 15 मिनट में सिर्फ एडल्ट्रेटेड ड्रग्स को एड्रेस करना है, तो जो कि हम अपने पीजी और डॉक्टरेट के साथ करते हैं, तो उसी क्रम में चलेंगे। यहाँ खाली हम रेफरेंसेस देंगे। तो अगर आप जीएमपी कंडीशंस के लाइसेंस लिए हुए हैं लेकिन वो खाली पेपर पर है, ग्रीन पेपर पर, और उसको आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, और वो जगह जहाँ पर आप औषधि निर्माण कर रहे हैं, वो जगह जहाँ पर आप उसको पैक कर रहे हैं, और वो जगह जहाँ पर आपने बनाने के बाद स्टोर कर दिया, आपकी औषधि में कोई भी फिल्थी मटेरियल नहीं था, आपकी औषधि में कोई भी प्यूट्रिड मटेरियल नहीं था बनाने में, आपकी औषधि में कोई भी डिकम्पोज्ड मटेरियल नहीं था, सब कुछ सही था घटक के रूप में, इंग्रेडिएंट के फॉर्म में, मगर आपने बनाया उसको इनसैनिटेशन में, पैक किया इनसैनिटरी कंडीशन में, रखा इनसैनिटरी कंडीशन में, बंद कमरे में, जहाँ पर कि न तो कोई कभी ह्यूमिड कंडीशन है या कोई भी एक इस तरह की कंडीशन है कि उसमें नथिंग इज देयर प्रॉपरली कंडीशन फॉर द गुड स्टोरेज कंडीशन। एनीहाउ, तो अगर आपने ऐसी जगह पर रख दिया तो ये संभावना है कि वह औषधि डिकम्पोज्ड होगी, खराब होगी, और फिर अगर वो मार्केट में जाती है और उससे कोई हेल्थ को इंजरी होती है उस औषधि का प्रयोग करने में, तो वो औषधि एडल्टरेटेड कही जाएगी। दैट मेडिसिन विल बी टर्न अंडर द एडल्टरेटेड कंडीशन इफ इट इज बीइंग प्रॉपरली प्रिपेयर्ड विद द गुड क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स, बट द मैन्युफैक्चरिंग साइट वाज नॉट गुड, इनसैनिटेटेड, the packing place was not good, workers were not properly dressed and properly performed, those who are doing that particular work, and they stored in a very humid condition or very a condition which is not proper under the good storage practices. That medicine may be injurious to health due to certain chemical changes taking place there due to these conditions, and that medicine will be termed as adulterated drugs. Now, the class C, it is saying if it is container is decomposed, if its container is composed in whole or in part of any poisonous or deleterious substance which may render the content injurious to the health. This is a really very good point, the class C of the section 33 EE about the packing material container. Friends, certainly you have gone through the different quality of the plastics, different quality of the cardboards, different quality of the polythene, different quality of the plastics in which these Ayurvedic medicines are being packed, any dosage form, right from the quath churn to the churn to or the ready-made preparation of the nowadays it is in the market, different kasayam, different swaras, different oils, ghrit, avle, company to company there is a variation, person to person who are in the MSME field, but having the field certification of the GMP, they are packing these Ayurvedic drugs in a, some are very good and they are really very good factory material. I mean, they are very good in their market, they are very good in their production, and so far they are having turnover of 1,000 crore and exporting the medicine abroad. But here the majority, yes, I mean it, majority of the Ayurvedic manufacturers are having less than 5 crore turnover, and they are in the their number is more than 5,000 out of the 8,000 registered manufacturers. Strict GMP regulations are minimizing the numbers. Cancellation of the licenses, manufacturing licenses are in process, going on. Yes, it's a good news for us who need quality, safety and efficacious Ayurvedic medicines. We are not here for the market of the people, but we are here for the good quality, safe and efficacious Ayurvedic medicines which may ultimately turn over good health to the global citizens and we all Indians too. So
Here if you see that the quality of the packing material, it is really a point of worry. So if it is packed in that condition, which is in due course of time making this Ayurvedic products injurious to health, that will become under the adulterated drugs. Fine. Next come to the class D. It is saying if it bears or contains for purpose of coloring only a color other than one which is prescribed. Okay, good. So if you have gone through the different tablets of very leading brands, I always try to not to name any company either for the good purpose or for the condemning purpose. Always I avoid the name of the company. Yes. For reason behind this, it is your wisdom. I am not advocating anyone. Yes, it is good or not. I am advocating anyone. Yes, not it is the bad. It is your wisdom which will decide as per the facts, as per the evidence, as per your experience, which company is good or which company is not good. Fine. So if you see different colors of the tablets, Ayurvedic tablets, different colors of the any specifically the tablets in the bati also, they are in the market with the color, even the different I can say not, they are not powders in colors, but the tablets only basically they are in the different colors. Fine. And sometimes some pediatric products they are adding some colors and the test flavors for the pediatric uses, that is under the Ayurvedic medicines. But if those excipients and those colors are not as per the rule 169 where the list of the permitted excipients are given, rule 169 of the drug rule 1945, permitted excipients for Ayurvedic medicines there, and if out of that list anyone is using any color or anything due to any reason, then that will be kept under the adulterated drugs. Here it's a question I am wished to raise before you all intelligentsia of the Ayurveda, right from student, scholar, research scholars to the faculty or the any stakeholders to the regulators. The permitted excipients is again copy paste of the allopathy, and they are using their excipients and assuring that they are the inert to the chemical entirety, which is a therapeutic agent, which is a having the pharmacological actions. They had performed a good researches on that, then that list has been prepared. What about us? What we have done? Just the copy paste. Whether any Ayurvedic formulations of the section 3A or the section 3H have gone through the inert test, which is necessary, which is compulsory to be used as anything as an excipients, that particular excipients which we are adding, even the tablet mating, the binding agent or the glidant or the flavoring agent or the coloring agent, anything like that, that is inert with that particular botanical or the herbo-mineral products by which we are making the particular tablet, a particular drug, individualized drug, whether that is the that excipients is showing the inertness which is necessary to be a part of the excipients in the modern drugs, I mean allopathic drugs. We are also modern, we are not less than any modern or the contemporary science. Yes, it's a nice submission before everyone. Yes, we are sometimes termed as a traditional because yes, we are 5,000, 4,000 year olds. I'm not going to discuss this matter. Yes, we are the oldest. Okay, with the dawn of the civilization, I can put it on record. So that is the point कि ये जो हमारा कलरिंग मटेरियल हम यूज कर रहे हैं या कोई भी एक्सिपिएंट्स यूज कर रहा है अंडर रूल 169, क्या उसकी इनर्टनेस के लिए कोई चीज आई है? मुझे याद आ रहा है कि एक बार संडे स्पेशल बैक 20 ईयर बैक संडे टाइम्स पब्लिश्ड द आयुर्वेदिक एक्सिपिएंट्स एंड द फॉर्मर एडवाइजर डॉक्टर एस.के. शर्मा, नाउ with very great regard to him, I pay my gratitude to him. Now he is late Professor S.K. Sharma. He contributed a lot, the AFI and the AAPI, all these
his personal efforts that the 7 or 8 volumes are in the market. First one was in the 1967 and the next was in the 2001. That we have to accept the contribution of former late Professor S.K. Sarma ji. Okay, he published into the Sunday Times in the June, the month was June. I have the cutting 2000 that the Ayurvedic excipients, and he quoted this point in his interview that many Ayurvedic manufacturers are using all excipients in their making, and we are legalizing this by putting it under the Rule 169 of the Drug Rule 1945. It is already in the practice, we are just legalizing it. That is the ratification. But the million-dollar question is here. Yes, you put it here for the legalization, but whether the inert studies has been done or not, it is a presumption that okay, excipients is inert. If it is not working with those chemical entities, then certainly the possibility is, the maximum probability is, it will not act with these our natural things. Okay, so if that color which is not under that list of the Rule 169 and added in the Ayurvedic medicines, that will be termed as adulterated. Then come to the clause E. It says if it contains any harmful or toxic substance which may render injurious to health. Point of discussion for us. Yes, they are saying that any toxic materials should not be added in the making of the drug. Dear friends, may I invite your attention on the Vishdravya categories of our Ayurvedic medicines? Of course, the definition of this toxic of the conventional, that is the allopathy modern people, and the definition of our Vishdravya is entirely different. We have notified under the Schedule E. And then if anyone is preparing a medicine with us, that should be shown conspicuously on the label. It's the rule. Fine. So if it is the toxic materials are there, and a drug inspector is inspecting and saying, oh, you have added here Vatsana, you have added here this Kuchla, and so it is adulterated because this is the established toxic material, then what the Ayurvedic manufacturer will do? If we will go line by line, law will go line by line, word by word, not the practicality. And these definitions, there is a need of amendment. Toxic material, only toxic word is not enough to cover our addition of different drugs of the Vishdravya notified specifically under the Schedule E. So here I request the policymakers to see this, look into this matter. Then clause F. If any substance has been mixed therewith so as to reduce the quality or strength. Yes. They are saying, they make the definition, any substance must not be added there which reduce the potency. And they means conventional medicine, the drug and cosmetic act made for this conventional medicine, allopathy. So they are saying if the chemical entity is the one antibiotic or anti-inflammatory or something like anti-hypertensive or anti-diabetic, that should be not having any material which reduce the potency. Means drug should be in its full form. Okay, good. Once again, I humbly request you to think about your Aushadhi Part Sanyojan for the classical formulations. And once again, on the section 3H, the proprietary and the patent Ayurvedic medicines. Our Aushadhi Part Sanyojan is in this crumb. If a Vishdravya is there, then its Prativish is also there to reduce its potency, to get it its proper therapeutic dose. A lot of examples are there. Wherever there is a Vasana, there is a temper.
Likewise. So our Aushadhi part Sanyojan is in the balance. When we are using the Vish Dravyas, then we are adding there something which is making it therapeutically appropriate. So, in this definition, they are saying the potency should not be decreased. Here, we are rationalizing the potency in our Aushadhi part Sanyojan. So, if once again, if people are visiting your pharmacy and saying, and applying this clause F, what will be the answer of Ayurvedic manufacturer? So I humbly request it that these rules of the copy paste is not appropriate. These must be modified as per the need, as per the, first I will say as per the classics of Ayurveda, where the Ayurvedic pharmaceutical fundamentals are in the same way, which must be clarified, and what is the need of Ayurvedic manufacturer to stand before law. Here I am favoring industry as an academia, because these rules may put in the those Ayurvedic manufacturers whosoever are having a 1000 crore rupees turnover or 1 crore rupees turnover in the problem, as per the words of the law. It's the act, right, passed by the parliament. But there will be no executive orders as per the for the rules. So here is need of attention, and these definition of Ayurvedic adulterated drugs may be, should be, must be modified as per the fundamentals of the Ayurveda. This is my humble submission. Yes, for the passing the examination, the paper 4th of the Rasas and the Basaskripna or anything else, you just go through the adulterated drug definition and write, and if any examiner is asking you, you just narrate and parrot everything. So you will be passed. But the analysis of these fundamentals is really, really required. And here is the one explanation is this Stern Book Company, book of the Dr. Vijay Malik. For the purpose of clause A drug shall not be deemed to be consist in whole or in part of any decomposed substance only by reason of the fact that such decomposed substance is the result of any natural decomposition of the drug. Natural decomposition. That is the matter of self-life period, and that is the matter of what we say Savirita Avadhi of expiry. If the natural decomposition is going on, then class A will not be applied. That medicine will not be turned, उस औषधि को adulterated drugs नहीं कहेंगे. और फिर आप आइए adulterated drugs की जो फाइन दी हुई है, adulterated drugs की जो पेनाल्टी दी हुई है, वो भी देखिए बहुत ही कम है, वही 1 साल हो. सो अगर इन पर हम लोग बात कर रहे हैं और पाएंगे कि नहीं, ये चीज़ें यहाँ पर सुधार की ज़रूरत है और सुधार होना चाहिए, तो निश्चित रूप से सुधार होना चाहिए. और स्प्यूरियस के लिए थोड़ा पेनल्टी ज़्यादा है, लेकिन मिसब्रांडेड और एडल्ट्रेटेड के लिए तो पेनल्टी वही है, 1 साल और 20,000 रुपीज़ अंडर द सेक्शन 33I, एंड देन 33J इज टॉकिंग अबाउट द पेनल्टी फॉर सब्सिक्वेंट ऑफेंस. ये थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है कि अगर दोबारा आप वही करते हैं, लेकिन ये 2 साल है, 2 ईयर, और फाइन जो है वो 50,000. तो बिजनेस को देखते हुए और डेयरिंग पर्सनालिटीज को देखते हुए कहते हैं कि हम तो बनाएंगे. अब यस, आई शुड से एज ए लर्नर ऑफ द सब्जेक्ट दैट इफ यू विजिट small Ayurvedic manufacturers, then think about the clause B. If it has been, clause B of the adulterated drugs, if it has been prepared, packed or stored under insanitary conditions, whereby it may have been contaminated with filth or whereby it may have been rendered injurious to health. Yes, I may say here, many times when we were in our educational tour, companies did not permitted us along with the teacher and the student
to visit their site. What is the reason behind this? Whether they are fearing about the clause B of the section 33(3)(EE) adulterated drugs? I hope so. This may be one reason, with the insanitary condition inside the company. Once again, I am talking about leaving aside and keeping those reputed companies who are getting the WHO GMP certificate. I appreciate all that. But here, in the local market, the people are in which way they are preparing. And no drug inspector is going to them to make it them what kind of the drug you are producing, where you are packing, how you are packing, at which place you are packing, where you are storing and supplying to the market. And see the containers. The class D, class C, everything is applicable. Whole this section 33(EE) from class A to the class F. So आज के लिए बस इतना ही. एडल्ट्रेटेड ड्रग्स की डिफिनीशन. आपके कोई सवाल हो ज़रूर पूछिएगा. अगले सेशन में हम आपके पास आएंगे सेक्शन 33A स्पूरियस ड्रग्स के साथ, और इस पर गंभीर चिंतन की आवश्यकता है, गंभीर मनन की आवश्यकता है कि ये कॉपी पेस्ट से हम कानून की नज़र में कितना सही निर्माण कर रहे हैं, और कानून कब हमको एक बहुत बड़े संकट में पैदा कर देगा, क्योंकि ये कानून है और हम जो बना रहे हैं अपने आयुर्वेदिक क्लासिक से बना रहे हैं, चाहे वो हमारे सेक्शन 3A की ड्रग हो, चाहे वो हम ऑथोरेटेड टेक्स्ट बुक से बनाई गई क्लासिकल आयुर्वेदिक मेडिसिन हो, या सेक्शन 3H की ड्रग हो, पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी आयुर्वेदिक मेडिसिन. हम अपने फंडामेंटल्स का प्रयोग कर रहे हैं, तो क्यों ना हमारे फंडामेंटल्स के हिसाब से एडल्ट्रेटेड ड्रग्स की डिफिनीशन जो आयुर्वेद के ऊपर लागू होती है वो बनाई जाए, न कि कॉपी पेस्ट करके रख दिया जाए, जो कहीं भी कभी भी किसी भी समय हमें संकट में डाल सकता है. विद दीज वर्ड्स, I once again thanks to everyone who is viewing our session of the rule the regulation on the brush the bushes or the trend with the tradition, the scientific salutation to Ayurveda. In this way, we shall be with you, and if any suggestions, we welcome. Thank you. धन्यवाद, आभार, साधुवाद, नमस्कार.